Number hold. My lord, I'm praying kindly see the affidavit filed by the connected matter, my lord, सब connected matter. in compliance of my lord's order. अच्छा कौन सा connected matter is 4.1. जी साहब। कब फाइल किया एफिडेविट आपने? कब फाइल किया एफिडेविट आपने? आईए नंबर? साहब कल फाइल हुआ थी। नहीं तो आईए नंबर होगा ना इसका? जी आई नंबर 2790 ऑफ 24। हाँ है, रिकॉर्ड पर है 2790। जी बताइएगा। मेरी प्रार्थना साहब ये है कि कोई भी सर्कुलर और कोई भी कानून साहब भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं होगा। सुनने देना, जी सर। इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं मैं आपकी क्वेरी थी हाँ साहब। बताइएगा। पहले क्वेरी क्या थी वो देख लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं। 13/2/2024 का आदेश है। नहीं पहले तो ये बताएं कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने जो एफिडेविट दिया था उसका क्या अर्थ निकलता, थोड़ा पहले तो समझा दें हमें। वर्मा जी आपसे पूछ रहे हैं जी साहब। उसका क्या अर्थ निकलता। हमने हमारा ऑर्डर शीट ये, द रिप्लाई विच हैज बीन फाइल्ड बाय वन श्री पीपी सिंह सन ऑफ श्री ए सिंह पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कटनी इज अ वेस्ट पेपर. It does not make any sense and does not communicate any sense that what he is trying to say. पहले तो commissioner is required to explain that what he was trying to say. That what is the case of the petitioners and what is the stand of the respondents. My lord, petitioner participated in EWS category, my lord. नहीं पहले तो ये बताएं कि ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने जवाब में क्या लिखा है, सो समझाएं तो हमको। कमिश्नर साहब को समझ में आया नहीं आया? वो आगे इसीलिए एडिशनल रिप्लाई दी सर। नहीं एडिशनल रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी। आपने कब परमिशन ली एडिशनल रिप्लाई देने के लिए? वो एफिडेविट के एफिडेविट ही तो मांगा था आपसे, एडिशनल रिप्लाई तो मांगा नहीं था। एफिडेविट वो नहीं कहा है कमिश्नर आप। हाँ वो पढ़ेंगे अभी। पहले तो ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने क्या दिया था, उस कमिश्नर साहब की समझ में आया? जी साहब। वो एक्सप्लेन करें पहले। रिप्लाई आप पहले वाला रिप्लाई देख लें साहब। हाँ पहला वाला रिप्लाई देखें ना। आइए 16359। 16359 पढ़िएगा। जी सर। मैं अनुमति पैरा 3 से पढ़ना चाहता हूँ सर। बाय हाँ पैरा 3 से पढ़िए। Answering respondent most respectfully submit that crux of the matter is that respondent number 3 has issued the advertisement for high school eligibility test 2018. The petitioner have submitted online form from physics subject of unreserved category candidates, and thereafter the petitioners have participated in examination conducted on 10/2/2019 in furtherance. Respondent have declared the result of the petitioner. Answering respondent most respectfully submit that between government has issued the notification 26/7/2022 whereby amendment has been made in Madhya Pradesh School Education Service Teaching Cadre Service Condition and Recruitment Rules 2018, wherein Rule 11 in Sub Rule 2 डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 26/7/22। ठीक है जी साहब। हाँ क्या कहा उसमें आपने? What 3 years is substituted as 5 years. जी साहब। And in the sub rules 2 the category wise minimum percentage of marks of For all qualifying reserved candidate including EWS. EWS रिजर्व कैटेगरी होती है क्या? बाद में आ गया साहब। 50%। इस सर्कुलर में आ गया साहब। अच्छा ठीक है फिर। Answering respondent most respectfully submit that so far the petitioner has taken a plea. Respondent number 2 has issued the revised subject wise list.
wherein physics subject of EWS category first counseling total 82 posts showing vacant, whereas second counseling only 3 posts of EWS category was showing vacant. It is submitted that district education officer Katni considered the entire controversy in detail and in this regard communicated with the Commissioner of Public Instruction by letter so wherein it has been categorically mentioned that petitioner number who is resident of village Paharua Tehsil, Dhimarkheda district Katni appeared in the high school teacher eligibility test examination 2018 having roll number so and so with the physics subject wherein secured total 78.3 marks and remained the consolidated position number 711 and declared failed by the तहसीलदार ढीमरखेड़ा वाइट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डेटेड 26/8/22। हाँ, कैसे कैसे हुआ एक सेकंड दिखाइएगा। कॉपी डिक्लेयर्ड फेल्ड कैसे हो गया ये? तहसीलदार साहब ने फेल कैसे कर दिया? तहसीलदार साहब की क्या अथॉरिटी थी? थोड़ा सा प्लीज इसको एक्सप्लेन करते चलिएगा जरा। वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्या पाया गया? वो प्रॉपर नहीं पाया तो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं पाया जाएगा तो फेल कर दिया जाएगा कि उस कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा? थोड़ा सा समझाएं तो हमको, इसीलिए तो हमने पूछा था आपके कमिश्नर साहब से। ये गलत लिखा क्या क्या पूरा नहीं, पूरा का पूरा काम स्टेनोग्राफर्स के ऊपर आजकल छोड़ा हुआ है क्या? एजी साहब को बुलवाएं क्या, समझाएंगे वो थोड़ा सा सब वो कि उनका कितना कंट्रोल है आपके ऑफिस के ऊपर? लास्ट वीक कि गवर्नमेंट एडवोकेट सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लास्ट वीक साहब ने आदेश दिया था उसके बाद कहाँ है आपके एडवोकेट जनरल? बुलाइए। नहीं, आपके आदेश का पालन हो गया साहब, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है सिस्टम साहब। लास्ट वीक माय लॉर्ड एहसान किया आपने हमारे ऊपर बहुत। नहीं माय लॉर्ड, दिस इज द लेवल ऑफ असिस्टेंस व्हिच वी गेट फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर एजी नहीं आ सकते तो हम चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर बोलते हैं कि नहीं, मैं बुला लेता हूँ एजी साहब को, पर मेरी प्रार्थना थी कि लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग माय लॉर्ड है। किस तरीके से बनाया है ये आप लोगों ने रिप्लाई? इसको क्या एक्सप्लेन किया कमिश्नर ने, आप बताइएगा। जी सर। बस यही पढ़वाना चाहता था मैं आपसे। क्या एक्सप्लेन किया कमिश्नर ने? व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द तहसीलदार टू डिक्लेयर अ कैंडिडेट फेल? दिस इज द प्रिसाइज क्वेश्चन व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर, वेयर ही हैज आंसर्ड दैट क्वेश्चन इन द एफिडेविट। इन दिस रिगार्ड देयर इज नो आंसर माय। देन सो माय नहीं, मेरी call your commissioner then. Call your commissioner. He will explain that what is the authority of the tehsildar to declare a candidate fail, as is mentioned in the reply filed by the district education officer. उसमें गलत लिख गया साहब, गलत लिखा है तो उसके लिए क्या किया आपने? कमिश्नर ने कहा माफी मांगी है? बोलिए, लिखाइए वो लाइन कि गलत लिखा है। ऐसा कहाँ लिखा उसने कि गलत लिख गया है, हम माफी चाहते हैं? नहीं तो हम कंटेम्प्ट ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास तो एक बहुत आसान रास्ता है। आप कितनी बार हमारा रोस्टर बदलवाएंगे? आई वांट टू माय लॉर्ड, आई एम आप लोग जाके करवा लेते हैं वो काम बहुत सुविधा से। एक बार फिर करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई एम कंफर्टेबल इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लॉ एंड आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस। यू कैन टेस्ट मी इन एनी फील्ड ऑफ लॉ। मैं उसके लिए अपोलाइज करता हूँ। नहीं, हम आपसे सख्ती दिखाते हैं, आप हमारा रोस्टर बदलवा देते हैं, आप हमसे फाइल निकलवा लेते हैं, फाइल कहीं और लगवा देते हैं। सारी टैक्टिक्स तो की जाती है। तो फिर इसका उत्तर कहाँ है बताइएगा ना तहसीलदार। इतना सही केस है। नहीं साहब, मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था, मैं साहब जी। के साहब ज्ञान में लाना चाहता हूँ। ये R5 हमने एक रूल फाइल किया माय लॉर्ड एडिशनल रिप्लाई में। In the year of 2018, my lord, there is no provision of the EWS. अच्छा, ये संविधान संशोधन कब हुआ? ईडब्ल्यूएस का कब आया? चलिए वो देखते हैं। जी साहब, R5 देख लें साहब। नहीं, R5 नहीं, जी साहब। पहले संविधान देखें। संविधान है आपके पास? नहीं है? जी है ना साहब। हाँ, पढ़िएगा कहाँ जुड़ा है वो प्रावधान। स्टेट ऑफ एमपी हैज माय लॉर्ड, स्टेट ऑफ एमपी को छोड़िए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो कानून आया साहब, ये है R7 पे। अरे, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है? नहीं है वो नहीं, पर ये साहब वही EWS का सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है साहब। हाँ, कैसे पढ़ा था? ये नोटिफिकेशन आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 14/1/2019। जी सर। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का प्रावधान आया है 14/1/2019। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
आर्टिकल 16(6) ठीक है, जोड़ा गया। अब ये एडवर्टीजमेंट की डेट बताइएगा। एक और निवेदन कर रहा हाँ नहीं, था एक सेकंड, एक एक करके चल रहे हैं, आपको सुनी तो रहे हैं, क्या कर रहे जी हैं। साहब। एडवर्टीजमेंट की डेट क्या है? एमपी में आया है साहब ये। एमपी में नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत में लागू होता है। जम्मू कश्मीर नहीं थे 370 एब्रोगेट होने के पहले कि आपको अलग से प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, you are part of the union territory of India and all the constitutional amendments will be applicable from the date when they are brought into effect. Don't try to tell me, नहीं तो लिखना पड़ेगा कि सरकारी वकील कहते हैं कि हम अलग संप्रभु राज्य हैं जिसमें कि भारत का संविधान लागू नहीं होता। नहीं सर ऐसा। हाँ बताइए, अब डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट बताइए। ये पात्रता परीक्षा हुई थी एनेक्जर P1 इज द माइनोट P1 11/9/18। 11/9 को 18 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या थी? 30/9/18। जी साहब। ठीक, हाँ P1। जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में साहब जो क्वालिफाई हो गए उनको फिर, हाँ फिर उनको फिर रिजल्ट कब आया इस परीक्षा का? रिजल्ट कब आया? हैं? एनेक्शन इसमें डेट कहाँ है यार? बस है आसपास में R1 घनश्याम पांडे आपने ये R1 लगाया था। कहाँ है वो रिजल्ट की एनेक्शन? R1 माइनोट R1 अर्लियर माइनोट फर्स्ट रिप्लाई के फर्स्ट साथ। अप्लाई। जी, इसकी डेट कहाँ लिखी है रिजल्ट की? है P6 पेज 50। नहीं वो तो ठीक है, वो तो R1 में भी लगा हुआ है। हम पूछ रहे हैं इसकी डेट कहाँ लिखी हुई है, इसके रिजल्ट को जारी करने की डेट कहाँ लिखी है? आपने रिप्लाई नहीं दिया, बताओ ना रिजल्ट का वक्त। आर यू डिस्प्यूटिंग दिस डेट जो ये कह रहे हैं? नो मैम। 28 अगस्त 2019 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ठीक है जी, फिर क्या हुआ? चलिए आगे चलें। यस, पैरा 4 से पढ़ना पैरा 4 ऑफ द रिप्लाई। एडिशनल रिप्लाई मान। जी जी पढ़िएगा। Petitioner have filed this petition aforementioned relief by contending that the advertisement for high school teacher eligibility test 2018 was issued by the पेज 23 2790 के साथ पढ़ रहे हैं ना? साहब। हैं? जी साहब, जी साहब 2790 up to 24 हाँ पैरा 4 मान लो। एक मिनट रुक जाइए। हाँ रिजल्ट कब डिक्लेयर? हाँ 28 डेट। पैरा पैरा 4 से पढ़ा हूँ साहब। प्लीज पढ़िए। Petitioner have filed this petition for the aforementioned relief for by contending that an advertisement for high school teacher eligibility test 2018 was issued by the respondent number 3 wherein application were invited by the Annexure P1 for participating in teacher eligibility test. The petitioners participated in the examination by submitting online form for physics subject of unreserved category candidates. The result was declared in which they obtained marks which did not qualifying them for appointment. Subsequently, after reducing the qualifying percentage for EWS category, the petitioner become qualified and
82 vacancies in AWS category which were shown in first counseling were not filled, and in the second counseling only 3 vacancies were shown in AWS category for physics subject. Thus, the petitioners are challenging the legality and validity of impugned action on the part of the respondent, whereby it is alleged that they have not filed 81 posts of the high school teacher in AWS category physics. Furthermore, the contention of the petitioner is that as per the advertisement, 10% posts were reserved for AWS candidate, but the respondents have filled up only one post of the said category. The remaining posts were not sought to be filled in the second round. Second counseling without any reason, therefore being aggrieved by the aforesaid action, the said petition filed before this honorable court. And since respondents submit that all such contentions so and so, my lord. Para 7, my lord. Yes. Answering respondent respectively submit that admittedly prior to the reduction of the qualifying percentage, wide notification dated 26 July 2022, the qualifying marks for AWS candidate were 60%, 90 out of 150, as notified by gazette dated 28 जुलाई 2018। 18 जुलाई को कैसे गजट आ जाएगा जब 19 का अमेंडमेंट है? फिर गलत बोला आपने। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये कैसे आ जाएगा जब संविधान में संशोधन ही जनवरी 2019 से हुआ है? थोड़ा सा समझाएंगे ये? पैरा 7 दोबारा पढ़िएगा। एंड गिलडियाल साहब, irrespective of the party you are representing, as a senior, please assist me. Yes, sir. ठीक है, ये that the answering respondent submits that they admittedly prior to the reduction in the qualifying percentage by notification इतना, the qualifying marks for EWS candidate were 60 as notified by gazette dated 28 जुलाई। जब 28 जुलाई को EWS का प्रावधान ही नहीं था तो फिर ये 28 जुलाई को ये कैसे आ जाएगा? ये वो अंग्रेजी गलत लिख नहीं अंग्रेजी, अरे अंग्रेजी कमिश्नर को अंग्रेजी नहीं आती ऐसा लिख के दे दीजिए आप, तो हम शासन को लिख के दे देंगे कि इनको अंग्रेजी नहीं आती है साहब। नहीं अरे अंग्रेजी गलत नहीं, जो लिखा है वही पढ़ा जाएगा। सॉरी, जो लिखा है वही पढ़ा जाएगा। हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कमिश्नर को अंग्रेजी नहीं आती। देन आई विल कॉल द कमिश्नर एंड ट्राई टू इंटरेक्ट विद द इंटरेक्ट। नहीं आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले यहाँ रुक जाइए, पहले कंप्लीट इट। हाउ कैन देयर बी अ नोटिफिकेशन dated 28 July 2018 prescribing some percentage for EWS category when for the first time provision of EWS was added in the constitution on 14th January 2019? ये हो सकता है क्या ऐसा? इनको पहले से ही बता दिया था क्या संविधान सभा ने कि 18 में EWS का प्रावधान? हो सकता है क्या सर? थोड़ा बताइए ना प्लीज। नहीं सर, हाउ इट कैन बी? ये तो संविधान इनसे पूछ के संविधान निर्माता लोग या संविधान के संशोधनकर्ता कार्य कर रहे थे। दे आर सबऑर्डिनेट टू द कमिश्नर, ऐसा है क्या? देखिएगा, रीडिंग ऑफ पैरा 7 ऑफ द एफिडेविट फाइल्ड बाय द कमिश्नर स्कूल एजुकेशन, दैट इज पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, नेमली क्या शुभ नाम है इनका? श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव। श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव। श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव इज ऑल्सो क्रिप्टिक। कहाँ है नोटिफिकेशन? 28 जुलाई का, पहले दिखाइएगा, इसको भी देख लें पहले। R5 इसी के साथ लगाया है ना? जी साहब। पेज नंबर 9 filed by श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, वाइफ ऑफ श्री अजय श्रीवास्तव, इज क्रिप्टिक। क्या लिखा है इसमें? पढ़िएगा। She has mentioned in para 7 of her affidavit as under. Within inverted commas, that comma, the answering respondents respectfully submit that admittedly prior to the reduction in qualifying percentage, comma, by notification dated 26th July 2022, the qualifying marks for EWS candidates were 60%, within bracket 90 out of 150 marks, bracket close, as notified by Gazette dated
28 जुलाई 2018, published on 30 जुलाई 2018, bracket close, and the petitioners had not achieved the qualified marks for appointment to the post of high school teacher, which was 60% marks, 90 out of 150 marks, bracket close, full stop. Next para. Perusal of annexure R4, which is the gazette notification dated 28 जुलाई 2022. ये R4 ही बताया था ना आपने? R5. R5, sorry, R5, which is gazette notification dated R5 पेज नंबर 9. पेज नंबर 9. पेज भी गड़बड़ हो रहा है. Dated R5. Page number 9. अच्छा. R5 within bracket 1, dated 28 जुलाई 2018, deals with the rules which were framed by the governor for participation in the eligibility test. Full stop. Marks which have been prescribed for the members of scheduled caste, scheduled tribe, OBC and differently abled persons is 50% and for others 60%. Full stop. There is no mention of EWS category in this notification, and that could not have been because for the first time constitutional amendment in Article 16 adding clause 6 was inserted by the Constitution within bracket 103rd Amendment bracket close Act, 2019, section 3 with effect from 14/1/2019, when the following provision has been added, namely within inverted commas bracket में square bracket फिर round bracket में 6 round bracket close, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause within bracket 4 bracket close comma in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the posts in each category, square bracket close, full stop. Thus, when the provision for EWS was introduced for the first time in the year 2019 by the constitutional amendment, then from where the commissioner has come to a finding that the qualifying marks for EWS candidates were 60% as notified by Gazette dated 28 July 2018, in as much as there was no EWS category at the relevant point of time. हाँ हाँ उसमें भी EWS का नाम नहीं लिखा है. उसमें है. इसमें सर एक्चुअली इसमें क्या है, हाँ. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं सर. इन्होंने ये पैराग्राफ 7 में बिल्कुल गलत लिखा है हाँ. कि EWS के लिए उस समय 60% था. हाँ. Actually, as my lords have rightly pointed out, there was no EWS in 2018. Yes. Now, like any other category, EWS was हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो, तो उसको बाद में जोड़ा ये उन्होंने. इन्होंने सर जब ये 19 में अमेंडमेंट आ गया, उसके बाद में इन्होंने 2022 में नोटिफिकेशन निकाला. हाँ.
अब इसमें सर कंट्रोवर्सी सिर्फ इतनी है, जी इफ आई कैन माय लॉर्ड पॉइंट इट आउट, जी but we fight these petitions on the ground जी that they are having sufficient number of vacancies अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी under EWS category. जी We are the candidates who are in the select list. कहाँ निकाला वो नोटिफिकेशन ये ईडब्ल्यूएस सर अगर हमारी पिटीशन में देख लें सर, ये इन्हीं की पिटीशन में है, हाँ इनके रिप्लाई में भी है वो। हाँ। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जी। 50% कर उसमें दिया। इन्होंने सबके लिए SC ST OBC एंड EWS हाँ। वो उसमें ऐड कर दिया। नाउ इट वाज रिड्यूस टू 50%। 50%। नाउ सर इनिशियली मतलब वील हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली जो रूल 2018 के आए हैं, देयर वर टू सेट्स ऑफ रूल्स, वन वेर एप्लीकेबल फॉर द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, द अनदर वाज वन फॉर द मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट। देयर वर टू डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। जी नाउ द एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स, द एलिजिबिलिटी criteria was my lord 60% for the general category, which included EWS at that time because there was no EWS was EWS. not there. Yes, and for others, my lord, SC, ST, OBC, it was 50%. Now, the procedure for selection at that time was that there was only one test, that was eligibility test. The candidates who have passed, who have qualified in eligibility test, meaning thereby who has obtained 50 or 60% marks, they will be put in the qualified category. Now, in that qualified category, the merit list will be prepared on the basis of the marks obtained in the eligibility test only. yes Initially, eligibility was valid for only 1 year. Then it was subsequently amended to 3 years. Then it was amended to 5 years. And as on today, eligibility is for lifelong. okay Meaning thereby it's like a 12th class certificate that if you have passed eligibility examination, you are eligible for qualified for life. always. Yes. Now, initially the selection was to be made only on the basis of the eligibility test. The marks obtained in the eligibility test will result into the merit list. Yes. And candidates will be placed in the merit list according to their merit. Right. Marks obtained in the eligibility examination. After 1/12/2023, now my lord, in 1/12/2023, there is an amendment in recruitment rules. जी Now, the selection is to be made on the basis of a selection test. The candidates who have passed eligibility examination, they are qualified to appear in the select test. अच्छा And the selection test will be held separately, and now the merit is to be prepared on the basis of the select list. that Selection means that test. the eligibility text becomes only a qualifying exam Only a qualifying. and the marks obtained therein will be of no consequence. Yes. So it is from 1/12/2023. Three. This amendment has come subsequently. Now we are talking about a recruitment which is prior to 1/12/2023. Right. So we have nothing to do with the selection test. And I can point it out from one of the letter which they have produced along with this reply. जी They have come out with that. They have mentioned that. annexure That is annexure R6. yes R6 में Mallots may kindly come to page 17. yes जी This is 28/8/2018 का ये लेटर है सर। जी और इसमें इन्होंने अगर आप 5.4 से देखेंगे, हाँ भर्ती नियम 2018 के नियम 11(5) में दिए गए प्रावधान के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। जी नाउ देयर आफ्टर पीईबी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांकों दशमलव के 2 अंकों तक के आधार पर विषयवार एकीकृत परीक्षा परिणाम सूची जारी की जाएगी। इस सूची में अभ्यर्थी को प्राप्तांक के समूह यथा स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, अतिथि शिक्षक का उल्लेख किया जाएगा। यह सूची पीबी द्वारा एमपी ऑनलाइन को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। योग्यता सूची में अंक दशमलव के पश्चात 2 अंक तक बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। सो इट मेक्स इट क्लियर दैट। नहीं लेकिन इशू यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है जी। इशू ये है कि 2018 में पात्रता परीक्षा हुई जी। 2018 में you participated in that eligibility test as a general category candidate and the passing marks prescribed were 60%. Now, subsequently, they may have extended the life of the eligibility test, validity of the eligibility test. But on the date of filling of the application, you did not participate as an EWS candidate. Therefore,
you were required to secure 60% marks to make you eligible. Now, once you have not secured 60% marks to make you eligible, subsequent prescription of 50% marks for EWS category, whether will it relate back to the 2018 examination or it will be for the subsequent examinations? I think that is the crux of the matter. Now, I come to that one. जी. My lord, after the result was declared, they said we'll fill up these posts in a phase-wise manner. In first counseling, second, they issued separate advertisement for every counseling. Right. And the documents were invited, the candidates were invited to upload their documents. एक सेकंड में आपको 1 मिनट के लिए और रोकूंगा, उसके बाद आप यू कंटिन्यू जी। प्लीज. क्या 2018 की पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद में उस पात्रता परीक्षा के आधार पे इन्होंने ईडब्ल्यूएस की कोई सीट भरी है क्या? हाँ, उसमें भरी है. वो कहाँ से मालूम वो पड़ेगा? सर ये हमारे डॉक्यूमेंट लगे हैं. अनेक्शर हाँ बता दीजिएगा, वो बता दीजिएगा. उस पात्रता परीक्षा के आधार पर ईडब्ल्यूएस की सीट भरी है, क्योंकि उस पात्रता परीक्षा में तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं थी. हाँ, 11 हाँ रिजॉइंडर जो है. हाँ 23/1/24 को फाइल किया. हैं? क्या फाइल किए? 23/1/24 को रिजल्ट फाइल. हैं? हाँ ठीक है, उसका मिल गया एनेक्शर. आज ये 3 पेज नंबर 14 में पेज नंबर 14. हाँ क्या कहा है इन्होंने? हाँ 30/3/23 में हाँ मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक समग्र सेवा भर्ती सेवा साबित 5/4 के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्य उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयु पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर 29/9/22 को विज्ञापन जारी किया गया था. जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्य राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक समग्र अंततः 19 अभ्यास को माध्यमिक शिक्षक के पद पर भौतिक विज्ञान विषय में नियुक्त किया जाता है. सीरियल नंबर 2 देखिए हमारे इसी में इमेंद्र सिंह सन ऑफ रघुवंशी फादर ऑफ नेम गुरुगोविंद सिंह मारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ये फरा. नंबर 2 वाले. नंबर 3 फिर देखेंगे श्रद्धा पांडे वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में. कॉलम नंबर कैटेगरी का नंबर देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में. ठीक है. इनके नंबर आपसे ज्यादा कम है? इनके नंबर कम है आपसे क्या? नंबर नहीं. अच्छा, लेकिन ये किस पात्रता परीक्षा के ऊपर से है इन लोगों का? नहीं नहीं, नियम 18 है. पात्रता परीक्षा तो एक बस 18 में होने का, उसके बाद नहीं हुई आज सर तक. पात्रता परीक्षा वही मैं बताने जा रहा था. हाँ. पात्रता परीक्षा पहली 2018 में हुई. हाँ. उसके बाद सीधे नेक्स्ट पात्रता परीक्षा 2023 में. ओके, एक सेकंड, ये भी पॉइंट नोट कर लें. एलिजिबिलिटी 2018 एंड 2023 उसके बाद. ठीक है. फर्स्ट सेकंड नाउ जी. जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को फिर इन्होंने किया है तो इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो रिड्यूस परसेंटेज है 50%, उसकी लाइट में दे विल हैव टू प्रिपेयर अ मेरिट yes, लिस्ट. they declared us qualified subsequently. We were initially we were not, where is the declaration? Malo, that declaration is not there, but my lords may please refer to, because after, my lords may please see, this process of recruitment started in 2018 when there was no EWS. They notified the vacancies for EWS based on that 2018 test, and which my lords should find annexure P4 आपके पिटिशन में लगा है. annexure P8 देख लें सर काइंडली. They separately notified the vacancies. P8 पे 57 मारे. अभी 57 क्या कहा है इन्होंने? 7 देखेंगे मारे फिजिक्स सब्जेक्ट मारे. हाँ हाँ ये इसमें देखेंगे मारे फिजिक्स सब्जेक्ट मारे पोस्ट है ये कॉलम नंबर ईडब्ल्यू. हाँ ईडब्ल्यूएस है ना. पर देख लें सर, हाँ, सब EWS सारे सब्जेक्ट्स के लिए सब में ईडब्ल्यूएस है. EWS है. हाँ, और So एक they introduce the EWS. हाँ जी. और ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन में कह दिया कि 50% हो गई एलिजिबिलिटी. 50% होगा. So by virtue of you being a member of EWS, We got anybody who secured 75 or more marks became qualified. And now they were required to prepare a merit list in that order and fill vacancies. They in the prepared the merit list. हाँ. Some of the candidates now इसी में सर पेज 8 में अगर आप देखेंगे page 8 of ये पेज ये P annexure P8 जो पेज 57 आप देख रहे हैं सर. हाँ हाँ इसी में इन्होंने लोगों को अपॉइंट किया इसमें. फिजिक्स में. जी हाँ एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक सीनियर को बताने दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए जी. इसमें सर अगर आप फिजिक्स से ही देख लें जी तो नाउ ये EWS में देयर वर टोटल इन फिजिक्स में 82 पोस्ट. 82 वैकेंसीज. हाँ Now out of 82 vacancies,
ये वन पोस्ट वॉज फिल्ड, ओनली वन पोस्ट वॉज फिल्ड। कहाँ से मालूम पड़ेगा? इसमें एक मिनट, ये वाला कहाँ, ये वाला ये कहाँ है? पेज नंबर 59 देखेंगे तो उसके आगे वाले पेज नंबर 59 वाले उसमें फिजिक्स में जाएंगे कॉलम 12 वाले। एक सेकंड, 59 कॉलम नंबर 12, यस। हाँ 12 में देखें कॉलम 12 वाले हाँ, कुल लिखते हैं फिजिक्स ईडब्ल्यूएस के आगे कॉलम में ईडब्ल्यूएस 3 पोस्ट कर दी मैंने। EWS कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ जस्ट मैंने ऊपर देखेंगे कॉस्ट सेकंड नंबर पे। हाँ 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 जी, फिजिक्स में 3 पोस्टें भर दी इनने। हाँ 4 पोस्टें भर दी, बाकी पोस्टें यस, ठीक सिमिलरली दे हैव डन इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, समझ गए, अब तो- समझ गए, आपकी बात समझ गया ना। इसको काटिएगा, अब लिखिएगा, पूरा काट दीजिएगा, लिखिएगा। एक और निवेदन था हाँ। इसमें 6.3 देख लें साहब, 6.3 ऑफ एनेक्जर R7 R7 आपके द्वारा जो फाइल किया गया है। एडिशनल रिप्लाई। जी सर। हाँ हाँ जी, May I read, Manu? हाँ प्लीज पढ़िए। Where in any recruitment year, any vacancy earmarked for EWS cannot be filled up due to non-availability of suitable candidate belonging to EWS, such vacancies for that particular recruitment year shall not be carried forwarded to the next recruitment year as backlog. हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, ये तो ट्राइबल ठीक है। 6.3 पढ़ा ना आपने? जी साहब। सब भर ठीक दिए है, ना इन्होंने। अब सुनिएगा, गलती हो तो बताइएगा। नहीं मैं सर बिफोर आप एक हाँ। बस एक सेकंड में और हाँ। ये हमारा जो ग्रीवांस है, ग्रीवांस आस बिफोर योर लॉर्डशिप इज that despite the availability of these vacancies and having the notified these vacancies as in EWS category and having the candidates in the select list, they have not appointed my lord us. Firstly, secondly, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में है, ये स्कूल एजुकेशन में है सर। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने पूरी EWS की कैटेगरी की सारी पोस्ट भर दी है उसी 2018 उसी 2018 के आधार। चलिए, अब सुनिएगा, कहीं गलती हो तो बताइएगा। जी, देखिए, these petitions are filed by the candidates being aggrieved of the act of the respondent number 2 in not fulfilling the vacancies under the EWS category under different subjects, which for the present are physics and आपका भी कोई specific subject सर है? इसमें सारे बहुत आपका सारे physics सर है, हाँ। just point. हाँ और आपका लगभग सारे सब्जेक्ट हैं सर इसमें। and other subjects, full stop. Next, since in WP 2671722 matter is pertaining to physics subject, therefore physics subject will be taken as an example which will be applicable to other subjects to that extent the example extends. Next paragraph. Petitioner's contention is that an advertisement was issued by the Professional Examination Board Bhopal for conducting eligibility test for उच्च माध्यमिक शिक्षक, that is higher secondary teacher, That's they call it high school teacher. high school teacher in the year 2018. Last date to fill the form was 30 September 2018. Full stop. Exam was to be conducted on 29th December 2018. Petitioners had participated in the said examination and had secured different marks. Next para. At that point of time, next para. At that point of time, admittedly, there was no EWS category and the vertical reservation was for SC, ST, OBC and general category. And OBC category, and then there was a general category, full stop. Petitioners participated under the general category, full stop. Next point. At that point of time, it is not disputed that the passing marks prescribed under the rules which have been enclosed, well, the rules was 60% for general category candidates, that is 90 marks out of 150, and 50% marks for SC, ST, OBC and differently abled persons. Next paragraph. Petitioner's contention is that earlier this eligibility test was to have a validity for 1 year. Later on, it was extended to 3 years, and now that validity of eligibility test scorecard has been made for lifelong. Full stop. Next paragraph. Petitioner's contention is that on 14/1/2019, provision for
economically weaker section was inserted, while 103rd constitutional amendment, which came into force with effect from 14 January 2019. Next para. It is submitted that counseling was after 2018. Second eligibility test was conducted in 2023. Next para. It is pointed out that respondents wide, अब वो एनेक्शर बताइएगा आप, जिससे कि इन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए 50% किया है, दैट इज एनेक्शर आप ही की पिटीशन से वही खुली हुई है. Just a minute. That wide Gazette notification dated 26th July 2022, whereby Madhya Pradesh State School Education Service within bracket teaching cadre bracket close service rules and service conditions and recruitment rules 2018 were amended. EWS category was clubbed with SC, ST and SC, ST, OBC and differently abled persons, and the qualifying marks in the eligibility test were declared to be 50%. Full stop. Next para. Once this eligibility marks for EWS category was declared to be 50%, then by operation of this amendment, petitioners who had secured more than 50% marks and were falling in the category of EWS, which was for the first time carved out in terms of the constitutional amendment dated 14/1/2019, became eligible candidates in the suitability test, eligibility test, full stop. And this fact is not disputed by the respondents. Next para. Thereafter, petitioner having secured more than 50% marks were required to be considered in the order of merit for appointment to the posts which were earmarked for EWS category. Next para. Annexure, वो चार्ट दिखा रहे थे आप. Annexure P8 is the list of subject-wise list of vacancy position in which there are two bifurcations, namely certain posts in each category are to be filled from amongst the guest faculty and remaining from the open competition, full stop. Under both the categories, EWS posts have been shown for each subject. Full stop. Thank you. Now, for example, in physics subject, posts under EWS category were shown as 82, 21 to be filled from amongst guest faculties and 61 from amongst others belonging to EWS category. Next para. Petitioner's contention is that instead of filling these posts, they have been left vacant, as can be seen from page 59, where subject physics appear. Against subject physics, it is shown that only one post was filled from amongst the guest faculty and two from others. Thus, only 3 posts were filled against 82. Next. अब इसमें तो 3 ही लिखा हुआ है, मैं 4 कैसे पढ़ लूंगा भाई? उससे हम नहीं जाएंगे. आप कंफ्यूज मत करिए. गुप्ता जी, आपके साथ क्या है कि आप खुद गोल कर लेते हो और बाहर व्हाट्सएप पे ज्यादा ध्यान रहता है आपका मुकदमे से. ठीक है, व्हाट्सएप पे कम ध्यान दो. आपके कहने से हम बड़े छोटे नहीं हो जाएंगे. ठीक है, हम तो यहां आ गए, वेदर यू लाइक इट और नॉट. नेक्स्ट. Thus, petitioner's contention is that as per the procedure and as has been adopted by
the tribal department, where also the posts of high school teachers are available, as can be seen from annexure. मतलब दैट इज आपके पिटीशन में शायद नहीं है, मेरी पिटीशन में एनेक्चर P7 लगा है, ये ट्राइबल लगा है। हाँ, annexure बताइए। आइए नंबर 1145 आप 24 वेंडर मारे हाँ, पेज नंबर 8 RG9 आरजी RG4 पेज नंबर 18 पर RJ4 RJ3 RG4 4 की 3। 4 बार जनजाति कार्य विभाग भवन अच्छा, पेज नंबर 18 पर as is evident from RJ3। आप लोग सोचते हैं सरकारी वकील हमेशा गलत रहता है, ऐसा नहीं होता है। वो किन किन डिफिकल्टीज में काम करता है आपको इस बात का एहसास नहीं है। तो RJ3 तो लोक शिक्षण विभाग का है। क्या कर रहे हैं गुप्ता जी आप? पढ़िएगा। जनजाति कार्य विभाग का ही आप पढ़ते हैं कहाँ है भैया? RJ3 पेज 14 पर। 18 में 18 अच्छा, 18 पे। तो ये RJ3 नहीं है फिर ये। पेज नंबर 18 माय लॉर्ड। पेज नंबर 18 फाइल्ड along with IA 1145/2024 full stop. That is the rejoinder. Next para. Thus it is pointed out that there is discrimination being meted out amongst the two departments of the state, namely the school education department and the tribal department. Full stop. Next para. Petitioner's contention is that once qualifying marks for EWS category have been assigned, there exists posts to be filled from amongst different categories, including EWS. Then that benefit of horizontal reservation should have been extended by preparing a merit list on the basis of the marks secured in the eligibility examination as was conducted in 2018, and on the basis of that merit list, posts of teachers falling under the EWS category subject to verification of their EWS certificate should have been filled in strictly in order of merit. Merit, yes. Next paragraph. Shri Manasmani Verma, learned government advocate, submits that the reservation for EWS was not available when the eligibility test was conducted in the year 2018. Full stop. Thereafter, reading from Rule 6.3, आपने पढ़ा था ना 6.3 अभी? अरे वकील साहब, अभी आपने 6.3 नहीं पढ़ा था? R7 का हाँ, नोटिफिकेशन डेटेड 31 जनवरी। पेज नंबर पूछ रहे हैं हम आपसे। पेज नंबर 24 मैम। 24 को सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। पोस्ट आइए नंबर 2790। हाँ, उसी का देख रहे हैं भाई। Reading from Office Memorandum dated 31st January 2019, bearing number 360/3/1/2019-ESTT within bracket RES bracket close, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi. It is submitted that there is no provision for carry forward of the posts meant for EWS category. Next para. After hearing learned counsel for the respondents and going through the record, it is evident that annexure P8 is the vacancy position for a particular year, though year is not mentioned in that vacancy position. किस साल के लिए है? Full stop. This vacancy position as contained in annexure P8 gives vacancy for EWS category by bifurcating them amongst the guest faculties and the open category, probably on the basis of some reservation which has been provided in the recruitment to the guest faculties by the state government. Full stop.
once that vacancy position has been notified, then for that recruitment year, all the persons who had cleared the eligibility test which was conducted in the year 2018 should have been considered by preparing a merit list in terms of the marks secured by them in the eligibility test and subject to other conditions as may have been prescribed in the recruitment rules in that behalf, and thereafter appointment should have been given. Full stop. Therefore, OM R7 will be of no assistance because it is not the it is neither the case of the petitioners nor that of the respondents that petitioners are seeking carry forward of the vacancies from one selection year to another selection Correct. year. Next पर सर आपके साथ रह के थोड़ा बहुत नहीं नहीं सर, that is the crux of the matter. next para. Thus, it is evident that respondents are committing an intentional mistake by overlooking this very fact that the vacancies which were advertised by them after amendment in the requirement for EWS and as the list of eligibility was still valid, comma, were required to be considered in terms of the merit, full stop. In fact, this court will not have any hesitation to say that persons belonging to EWS category will, by operation of prescription of reduction in qualifying marks for EWS category, subject to production of EWS certificate, will be entitled to fall in that category and count their merit in the order of marks secured by them in the eligibility test. Full stop. ये eligibility test subject wise होता है मेरे ख्याल से subject wise होता है eligibility test. Full stop. Thus, these petitions can be disposed of directing the respondents to prepare a subject-wise list of merit list, subject-wise merit list on the basis of the marks secured by the candidates under the EWS category who had secured more than 75 marks in the eligibility test which was conducted in the year 2018 and if the and fill the posts of the remaining posts strictly in order of merit under the EWS category subject wise, full stop. Let this exercise be completed within 45 days of receipt of certified copy of the order. Till then, no vacancies will be allowed to be filled by the respondents unless this procedure is completed, and after that all the vacant seats will be notified for recruitment in the next recruitment year. I'm grateful. In above terms, petitions are allowed and disposed of. छोड़ दिया है आपके कमिश्नर ने, लेकिन सही जवाब नहीं दिया है. उनको बोलिए थोड़ा इंग्लिश की क्लास लगा लें, पढ़ लें, उसको गलत जवाब ना दिया करें. वो छूट गया क्या सर? लास्ट में थोड़ा सा कहीं 75% आ गया. 75% नहीं, 75 मार्क्स आए. 75 मार्क्स आए. परसेंटेज तो हो ही नहीं सकता. 60 के ऊपर 75 हम कौन होते करने वाले. मार्क्स. ग्रेट. Number 5, Verma. This matter is clearly covered by Annexure P7 to Lordship P